Oh boy. So Netflix पे एक मूवी देखी थी मैंने recently. The name of this movie is Deadly Illusions. Now this is not a Netflix original film, but Netflix did brought this to distribute and showcase it on their OTT platform. Now नाम से ही लग रहा है Deadly Illusions means there would be thrill, there would be something like a murder maybe, and okay, let's continue with the journey and let's talk about it. So इसका सोल क्या है, इसका थीम क्या है इस मूवी का? So there this writer, a novel writer, वो thriller novels लिखती हैं and she is a celebrated writer. So she is going through a writer's block. Writer's block, if you understand, is a time in जब आप एक situation में आ जाते हो that you can't think creatively enough to produce. So एक ऐसा block आ जाता है. Now she is going through that phase कि समझ नहीं आ रहा यार क्या लिखूं, और कौन सी नॉवल लिखूं. So she's already a celebrated novel. Now she is trying to उनमें काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है कि भाई जब अगली नॉवल निकालोगे सो विल ऑल गेट बेनिफिटेड एंड ऑल दैट, जो होता है बिजनेस में. तो शी इज़ इन अ राइटर ब्लॉक. सो होता क्या है कि एंड शी इज़ मैरिड, शी हैज़ किड्स. घर के चीज़ों में और बच्चे संभालने के चीज़ों में वो टाइम नहीं निकाल पाती. सो शी वांट्स टू बी एट पीस इन अ सेक्लूडेड एनवायरनमेंट जहाँ पे वो हस्बैंड के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में इतना ना सोचे. तो शी हायर्स अ नैनी, अ गवर्नेस. शी इज़ अ यंग नैनी, रिलेटिवली क्वाइट अ यंग नैनी. सो वो पहले तो आती हैं एक आध दिन के लिए एंड दिस राइटर लाइक्स इट. तो कहती है कि फुल टाइम बन जाओ, बच्चों का ध्यान रखो, and I'll write novels. So that's how this nanny becomes an integral part of this story. So that's how the story involves. In fact, the story involves with the writer herself, her husband, and the nanny. यही तीन pivotal roles हैं. In fact, correction, husband का भी कुछ खास रोल नहीं है. Primarily, these are the two characters, the writer and the nanny. Okay, now let's talk about the star cast. Greer Grammer, she's playing the character Grace, the nanny. The celebrated writer, I told you, the writer's name is Mary Morrison. She is being played by Kirsten Davis. Tom Morrison, her husband, the writer's husband, and this gentleman has been played by Dermot Mulroney. और भी कैरेक्टर्स हैं, but let's face it, these are the three main characters. And like I said before, even the husband's character is totally useless. Primarily इन दोनों के बीच में ही रहते हैं. Now I'll share my honest opinion about this. सुनने में तो मज़ा आ रहा है. Writer's block है, वो she starts to pen her thoughts and she has a nanny. फिर वो nanny काफ़ी sweet सी, काफ़ी innocent सी लगती है in starting, and like in every thriller happens that there's something mysterious going on. तो ये वाला पार्ट थोड़ा प्रेडिक्टेबल है. इनफैक्ट ये जो थीम है, ये प्लॉट है, मैं स्पॉइलर ना देते हुए भी मैं कह सकता हूँ कि guys, you might have seen this in some stories, movies, series, maybe read in some novels too. ये काफ़ी क्लीशेड और पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है. ये फॉर्मूला काफ़ी ओल्ड हो चुका है ना. बट स्टिल आई वुड से दिस इज वन थीम जिससे हम खेल सकते हैं. I mean, a writer, a director can play with it. इसको इंटरेस्टिंग बना सकता है. हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट शैरॉन स्टोन के बेसिक इंस्टिंक्ट में भी देखी थी. बट आई बिलीव, पर्सनली बिलीव, ये ऐसी थीम है जो इवन इफ इट्स क्लीशेड हम इससे खेल सकते हैं. While I'll start explaining, not exactly explaining the story, but I'll explain my experience about the story, the movie. मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा. The first part will be a generic no spoiler part, and then gradual bit of spoilers maybe in the second and third act. So the first act, like I said, writer's block. She has a nanny. The nanny is sweet, innocent. Eventually, वो writer इसे kind of दोस्ती करने लग जाती हैं, and there's a enigmatic relationship between the three: the husband, Tom, the writer, Mary, and the nanny Grace. इन दोनों में काफ़ी convoluted सा एक relationship रहता है. Now in the second act,
things starts to show a bit. Second act में ये पता चलता है कि okay, the writer has been basically forced by her distributors and her investors that story में थोड़ा सा मसाला लाओ, maybe put the pivotal character, the protagonist as the antagonist, make that twist कि hero को ही villain बना दो. Though the writer Mary is skeptical about the thought, but she thinks that okay, let's try. So ये convoluted scene होता रहता है, and eventually Mary sees Grace as a part of the character she's writing. So वो जो write कर रही है एक novel that's based on a nanny जो kind of murder करेगी, kind of a thriller book है. So वो देखती है Grace को उस रूप में, and she visualizes that and then writes it down. इस दौरान क्या होता है, रियलिटी और इल्यूजन के बीच में ना फर्क पता नहीं चलता मैरी को. सो शी स्टार्ट्स टू एक्ट वियर्ड, इस दौरान थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग जाता है कि ओके, व्हाई शी इज सो कंफर्टेबल विद दिस ग्रेस अराउंड हर किड्स, she's there totally all the time. So anyways, that's the producers and the director's vision about it. Third act, okay, before talking about the third act, कई बार ऐसा होता है कि the first act is quite engaging, quite thrilling. In fact, very honestly, I'll confess, मैंने जब ये मूवी देखनी शुरू करी थी, I was intrigued by the first act. मुझे लगा कि even if it's a cliched script, it's the same story जो हमने पहले कई बार देखी है, still I'll invest on it because शायद कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ अलग सा निकल के आएगा, maybe in the treatment, maybe in the way they execute the movie, शायद कुछ अलग सा आएगा. And for that अलग मुझे लगा कि शायद मुझे देखना चाहिए. Second act was kind of a trembling, तो मुझे लगा कि okay, there are times जब first act अच्छा होता है, second act उतना अच्छा नहीं होता, and then third act इतना phenomenally अच्छा हो जाता है कि वो second act की जो trembling thing थी उसको भी make over कर लेगा. But the third act fall flat. Cringe बन गया वो movie. I have no complaints about the direction, the actors. Maybe they did what they had to do, but what I personally feel, it lacked execution. Maybe it didn't lack vision. Maybe there was some vision. If I'm trying to be positive around that, what it lacked was execution. वो ऐसा प्ले हो नहीं पाया, डायरेक्टर उस तरह से हम ये स्टोरी को दिखा नहीं पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, हमारे सामने वो प्रेजेंट नहीं कर पाया जैसा होना चाहिए था. And that's where this story, this movie became one of the worst movie ever. मैं इसको 2, maybe 1.5 out of 5 दूंगा. It's not worth it. I'm sorry अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो. That's my opinion. मुझे ये मूवी बेकार लगी. स्टार्टिंग अच्छी थी, very honestly स्टार्टिंग अच्छी थी, and that's where I invested on the movie. चलो देखते हैं. But the third act was cringe, totally cringe. It's not worth it. जो मिस्ट्री थी, जो सस्पेंस था, जो ट्विस्ट था, बताना ठीक नहीं रहेगा. स्पॉइलर आप बताओगे बाद में. So having said that, मुझे ये मूवी बहुत क्रिंज लगी, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड. अगर एंडिंग किसी और तरीके से होती तो शायद ये मूवी अच्छी हो सकती थी, बिकॉज इट स्टार्टेड ऑफ वेल. थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बीच में कॉम्प्लिकेशंस थी, बट आई थॉट टू गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये चलो थर्ड एक्ट में शादी पुल अप हो जाएगी, but on the contrary, it fell flat. So anyways, that was my review and vision and opinion for the movie Deadly Illusions, which you can watch it on Netflix. अगर आपने ये मूवी देखी है so बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, and if you like the way I review the movies and give my movie recommendations, do hit the like button, press the subscribe button, and don't leave without pressing the bell icon.